Very good morning students, welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture I am going to start your last topic of chapter 5 accounting ratio. The topic which I am covering in this lecture is profitability ratios. In this lecture I am going to explain you the formulas of types of profitability ratio only, and the numericals I will start from my next lecture. See, what is profitability ratio beta? Profitability ratios are a type of accounting ratios that help in determining the financial performance of business at the end of an accounting period. Profitability ratio shows how well a company is able to make profit from its operation. Profitability ratio इसलिए यूज़ होता है so that they can determine the financial performance of a business at the end of accounting period. Profitability ratio ये बताने की कोशिश करता है कि how well a company is able to make profit from its operation. See types of profitability ratio. There are 5 types of profitability ratio, which is as per your new syllabus of accountancy. Number 1, gross profit ratio. Number 2, operating ratio. Number 3, operating profit ratio. Number 4, return on investment. Now see the first type of profitability ratio, that is gross profit ratio. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेटा आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था. ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते थे व्हेन यू आर मेकिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो वही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है बेटा. ही सबसे पहले इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दैट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स रेवेन्यू. नेट सेल्स रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन करता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. Formula of gross profit ratio is gross profit ratio is equals to gross profit upon net revenue from operation into 100. ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नेट रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दीजिए, तो यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट. A fluctuating gross profit ratio is indicative of inferior product or management practices. Now see the second one, that is operating profit ratio. Operating ratio is calculated to determine the cost of operation in relation to the revenue earned from the operation. Operating ratio किस लिए होता है बेटा? Operating ratio determine करता है कि cost of operation कितना है आपका in relation to revenue from operation. इसके लिए आप operating ratio calculate करते हैं. The formula of calculating operating ratio is equals to cost of revenue from operation plus operating expenses upon net revenue from operation into 100. Operating ratio is equals to cost of revenue from operation plus operating expenses upon net revenue from operation into 100. That is operating ratio. Cost of revenue आपको पता है. Cost of revenue from operation क्या होता है? Cost of revenue from operation is opening inventory plus net purchase plus direct expenses minus closing inventory, और revenue from operation minus gross profit. ये मैंने आपको turnover ratios में भी बताया था. Now see operating expenses क्या होते हैं? Operating expenses is equals to employee benefit expenses plus depreciation and amortization expenses plus other expenses, इसमें office and administration expenses, selling and distribution expenses, discount, bad debts, interest on short term loans सभी आ जाते हैं. Operating income is equals to trading commission received, cash discount received, that is operating income. Depreciation and amortization expenses are included in operating expenses. Spare parts and loose tools are excluded from inventory. ये आपको ध्यान रखना है. Depreciation and amortization expenses include होता है operating expenses में, और spare parts and loose tools are excluded from operating expenses. Now see next, that is operating profit ratio. Operating profit ratio, this ratio measures the proportion of an enterprise cost of revenue from operation and operating expenses in comparison to its revenue from operation. So operating profit ratio is a type of profitability ratio that is used for determining the operating profit and net revenue generated from the operation. It is expressed as a percentage. The formula for calculating operating profit ratio is equals to operating profit upon revenue from operation into 100, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो. अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. नाउ सी, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मे बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेज माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नोट बेटा, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज आर इंटर रिलेटेड.
Operating ratio and operating profit ratio are interrelated. Total of both these ratio will be 100. For example, if the operating ratio is 80%, it means that operating profit ratio is 20%. A rise in operating ratio will lead to a similar amount of decline in operating profit ratio and vice versa. Now see the next formula, that is net profit ratio. This is fourth one. Net profit ratio is an important profitability ratio that shows the relationship between net sales and net profit after tax. When expressed as percentage, it is known as net profit margin. Formula for calculating net profit ratio is net profit after tax divided by net sales. Net profit after tax upon net revenue from operation into 100 is equals to net profit ratio. नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है बेटा? द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस अदर इनकम्स माइनस टैक्स. Indirect expenses and losses are office expenses, selling expenses, interest on long-term borrowings, accidental losses. That is indirect expenses and losses. Now see the last one beta, that is return on capital employed or return on investment. Return on capital employed or return on investment is a profitability ratio that measures how well a company is able to generate profit from its capital. Return on capital employed किस लिए यूज होता है बेटा? This ratio reflects the overall profitability of the business. It is calculated by comparing the profit earned and the capital employed to earn it. This ratio is usually in percentage and is also known as rate of return or return on capital employed or yield on invested capital. ठीक है? The term investment here means long-term funds deployed in the enterprise. Return on investment को calculate करने का formula है बेटा, return on investment is equals to earning before interest and tax, or you can say net profit before interest and tax upon capital employed into 100. When earning before interest and tax is equals to earning before interest and tax or profit before interest and tax, that is also called earning before interest and tax. कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम लाइबिलिटी साइड. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड. और अगर आप इसको एसेट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. नॉन करेंट एसेट्स होती है टेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. वर्किंग कैपिटल इज करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज. इज इट क्लियर? तो ये आपके 5 फार्मूलाज हैं आपके वर्क उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के. नोट डाउन द थिंग्स प्रॉपरली इन योर कॉपी एंड डू योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क. एंड 16 को आप जब आपके स्कूल ओपन होगा कॉपीज़ विल बी सीन. थैंक यू बेटा, हैव यू अ नाइस डे.